Abhigyan Academy. Let us discuss one important topic from your polity section, that is judicial review. So this is a part of your judicial review. So when we talk about judicial review, it is a very important part of our constitution, and even if the parliament wants, then also parliament cannot take away this power from the judiciary. Okay, so judicial review of what? जुडिशियल रिव्यू किस चीज का करेंगे? अब जुडिशियल रिव्यू करेंगे द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शंस. ठीक है, सो जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर्ड एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द जुडिशरी विल लुक आफ्टर whether the executive and the legislative actions are taken according to the provisions of the constitution or not. ठीक है, तो judicial review of the executive and legislative actions, the enactments, the laws. Okay, now if we talk about the judicial review articles, we have to mention one important article, that is article 13. Article 13 talks about the judicial review. It empowers the judiciary. Okay, it empowers the judiciary to look after the legislative and executive enactments and whether they have followed the provisions of the constitution or not. So article 14 empowers the judiciary for the judicial review. Then we have article 32. It talks about the writs. ये 5 writs के बारे में बात करता है. writs मतलब क्या? Order. ठीक है, अब आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहा है कोई भी इंडियन सिटीजन का, if a citizen's fundamental rights are harmed, कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं. So if the fundamental rights are affected of anyone, then that individual can directly approach the Supreme Court. And on the basis of that, Supreme Court issues 5 orders or writs. And this is given under Article 32. Then we have Article 131. Basically, it talks about the original jurisdiction of the Supreme Court. And this is associated with the federal disputes. Federal disputes means the center-state disputes. ठीक है, ये जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में या स्टेट और स्टेट के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल जजमेंट कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा. आर्टिकल 136, it talks about the power of the Supreme Court to grant special leave to appeal. In the special cases when the party appeals to the Supreme Court, then they can be granted leave by the Supreme Court. Article 226 empowers the High Court to issue writs. आर्टिकल 32 जैसे मैंने बोला रिट्स या ऑर्डर्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड. सेम अंडर आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट इशूज 5 रिट्स व्हेन द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स आर अफेक्टेड. आर्टिकल 32 में से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है. 226 में फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द लीगल राइट्स आर आल्सो इन्वॉल्व. सो जुडिशियल रिव्यू जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. And the chief architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, have called Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution, because ये जो article है ये बहुत ही ज्यादा important article है judicial review के part में. अभी थोड़े से important cases अगर हम लोग discuss करते हैं, then there are some important cases associated with the judicial review part. The first case is your 1951 का शंकरी प्रसाद case. In this case, the Supreme Court said that the Parliament can amend any part of the Constitution, including the fundamental rights. Parliament के पास में power है, Constitution के कोई भी part को वो amend कर सकते हैं. इस amendment में they can even amend the fundamental rights. ठीक है. Next, in 1967, again another judgment came in the case of गोलकनाथ. गोलकनाथ जजमेंट आया एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना पहला जो जजमेंट दिया था ये थोड़ा सा रिवर्स कर दिया. एंड हियर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने स्टैंड जो है अपना चेंज कर दिया. हियर अगेन इन 1973 सुप्रीम कोर्ट अगेन चेंज इट्स स्टैंड और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन including the fundamental rights part, but parliament cannot change the basic structure part. ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये जो चीज है ये फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला. उसके बाद में
1980 में अगेन देयर वाज अनदर जजमेंट दैट इज मिनर्वा मिल्स केस, और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो जो पावर है जो जुडिशरी को दिया गया है, ये पावर पार्लियामेंट चाहे भी तो भी नहीं ले सकता है। Judicial review is a basic structure part of the Indian Constitution that cannot be taken by the Parliament by even amending the Constitution. ठीक है, तो ये जो चारों जजमेंट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, बट यहाँ पे बोला गया है एट प्रेजेंट अभी ये सीन है कि जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स if the laws are passed by the executive or legislative, if they are not according to the provision of the constitution, then they can be declared as null and void by the judiciary. On the other hand, parliament can amend the constitution, can change the constitution, but cannot change alter the basic structure part of the constitution. So this is the current situation between the government and the judiciary, and this is the current situation of judicial review. ठीक है, तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136, these articles are also important. I hope this video is helpful for you. If you have any doubt, you can directly reach us. Our contact number is given here in the below section. It is given. You can just directly contact us. Thank you. Thank you very much.